Good morning, students. Today I will further continue the first chapter of Geography, Conserving Resources. Mona had a nightmare. मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं. वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया. उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lord replied Amma. हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं. राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया. आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है. There are many ways of conserving resources. संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and rushing things. प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा
योगदान दे सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज फॉर ए वेरी गुड कॉज, सैड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ alive. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज व्यर्थ न हो। उससे स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मैं बहुत ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। I will make sure that water is not wasted at home, said Asa. Every drop of water is precious. मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंशियल कॉस्ट द चिल्ड्रन। यह कुछ कार्य मोना, राजू और मित्रों ने किए। क्या आप विचार? These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द life support system that nature provides.
Therefore, it is our duty to ensure that हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो सकता है कि all uses of renewable resources are सस्टेनेबल। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। द डैमेज टू नेचुरल environmental system is minimized। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया। हम लोग नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। So question first, what is resources? I think that can be used to satisfy a need is a resources, for example, clothes, utensils, food, grains, honey, books, all the things around us, the water, electricity, transport, vegetable or fruits, all are resources, as all of them have some utility. Question second, what do you understand why the statement natural resources have utility and value? Natural resources have utility and value is true. All materials available in nature have some use or value, and that's what makes that valuable. First, water or vegetation all have utility or usability. They may or may not have economic value. Second, metals have economic value, but a landscape may not have. But both are important to satisfy human need. Number third, time and technology makes them a resources. Next question, which two factors change a substance to a resource? Answer me. The two factors are time and technology. Next question, what leads to creation of new resources? Answer, the knowledge, ideas, invention and discoveries by people leads to creation of more resources. The discovery of fire led an idea of cooking and other related fishes. Invention of wheel led to change in of transports. What is technology? Explain with example. Technology is the
application of knowledge and skill in doing or making a thing with the use of technology. First, flowing water or wind is used to generate hydroelectricity or wind energy. Why are human considered as a resources? Time and technology help change a substance to a resource. They are related to needs of people. It is the ideas, invention, knowledge, and discoveries by people that lead to creation of resources. For example, discovery of fire led to cooking and invention of fuel to new modes of transport. Technology by human led a generation of electricity for falling water. Give Next question, give an account of natural resources. Natural resources में resources draw from nature and used without much modification are called natural resources. Water, soils, minerals are all natural resources. Many of the resources are free gift of nature. They can be used directly. In some cases, tools and technology are needed to use a natural resource in the best way. How are natural resources classified? Natural resources are classified into different groups. First, level of development and use. Second, origin. Third, stock. Fourth, distribution. Next question, give the classification of natural resources on the basis of level of development and use. Answer में, based upon their development and use, resources are classified into two groups. They are actual resources and potential resources. Actual resources are the resources whose quantity is known. They are being used in the present. Examples, the rich deposits of coal in rural region of Germany, Jharkhand, Odisha, etc. Petroleum in the West Asia, the dark black soil of the Deccan Plateau in Maharashtra. Potential resources में, potential resources are those whose entire quantity is not known. They are not being used at present due to lack of appropriate technology and finance, but we can use them in the future. Examples, the uranium found in Ladakh can be used in future. High speed winds were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resources and wind farms generate energy using windmill like a
Netherlands. Next, what are the broad category of natural resources? Based on renewability, natural resources are broadly categorized into renewable and non-renewable resources. So, renewable resources are renewed or replenished quickly. Some of them may ultimated and are not affected by human activities. Example, solar and wind energy. Non-renewable resources have a limited stock. Once the stock are exhausted, it takes thousands of years to be renewed or replaced. Hence, such resources are considered non-renewable. Examples, coal, petroleum, and natural gas. Thank you.